welcome back to my channel. My name is Avinash Nair. I hope you guys are doing absolutely fine. So today I'm gonna discuss a Lightroom trick. I mean Lightroom Photoshop जो भी बोलना है बोल लो phone के Lightroom पे. I'm gonna show you some of the tricks and tips so that you can make your photos go viral. Viral तो नहीं in terms of, but you can make your photos little more appealing. ये बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है एंड यू डोंट हैव टू यूज़ एनी प्रीमियम एप्स. इट्स फ्री अवेलेबल ऑन इट. तो आपको क्या करना है सबसे पहले, यू जस्ट हैव टू गो टू द कुछ नहीं, जब आपको प्ले स्टोर तो पता ही होगा. यू जस्ट हैव टू गो टू प्ले स्टोर एंड जस्ट डाउनलोड द Adobe Lightroom ऐप. इट्स अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. हाँ, इन ऐप परचेजेस आर देयर बट वी डोंट नीड इन दिस ट्यूटोरियल. अगर आगे भी आएगा तो आई टेल यू इफ इट इज़ नीडेड. डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूँ मैं, ऐसा कुछ होता है तो. So yeah, let's begin with it. So I have Lightroom app running up. मैंने खोल लिया. So you have to just click on this and you have to import. You can follow along with me. Before that, let me tell you a fun thing. This is a photo on the left side and this is the right side. Which one you vote for? हाँ, right वाले में थोड़ा सा कलर ज़्यादा है, मुझे पता है अगर if you are watching on an AMOLED panel. But make sure that you can do color settings afterwards, keeping in mind that. So what do you think? This is better or this is better in terms of dynamic, overall color, overall detailing? Which one is better? Do let me know in the comment section. So this is the second photo is edited by Adobe Lightroom, not PC, the mobile app, and it took me around 4 to 5 minutes and I got a good response on Instagram. So some of my friends told that make a tutorial about that. So I did not use any kind of presets for that particular photo. It was very pure and very minimalistic settings I used in the Lightroom. So do let me share that also. क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है, प्यार ऑल्सो आई गेस. ओके, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आई जस्ट इम्पोर्टेड दोज फोटोज. आई गेस यू नो हाउ टू इम्पोर्ट. ओके, आई हैव इम्पोर्टेड. सो दिस इज माई Lightroom folder. You can follow along with me if you are using the same photo or you're trying out your old nostalgic trip photos. Okay, so this is the photo I shown you in the reference. So here's the photo. You can have a reference again. Okay, ये वाली फोटो आप मन पे रख लो. And I'm going to transform this particular photo to that level. So मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे या 3 से 4 मिनट लगेंगे. But I am giving you a disclaimer before that. ज़रूरी नहीं है कि I'll be able to attain that same level because maybe यहाँ पर वीडियो के चक्कर में मैं उतना डेडिकेशन ना दूँ and maybe I can surpass the results of that particular photo. So you know what will happen. So let's begin. So what have to do is import कर लिया आपने, simple. What you have to do is just go to the settings. Here we have the auto button on the screen. Just put the auto. And one more tip guys, if you are a beginner then only use auto. क्योंकि what happens in sometimes in auto settings your face gets overexposed. थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा हूँ तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी बता देता हूँ. तो आप it will look little cartoonistic, little cartoon kind of लगे, ऐसा लगेगा कि वैक्स चढ़ गया फेस पे. तो you know sometimes it happens. So again after clicking on auto, simple as that. You just go to, no need to go with color profiles and all. आपको अपने हिसाब से कलर सेट करना है. You have again presets. तो मैं preset वाली वीडियो डिफरेंट उसमें बनाऊंगा, डिफरेंट प्लेलिस्ट पे बनाऊंगा, आई मीन डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा. देन गो टू लाइट्स एंड इट्स ब्राइट सनी डे. तो यू डोंट हैव टू प्ले अराउंड विद एक्सपोजर. सो यू कैन जस्ट, आप थोड़ा सा एक्सपोजर कम ही रखें क्योंकि ऑलरेडी ओवर एक्सपोज था. एंड यू कैन लिटिल बिट इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट. ओके, these are just general settings. According to tweaking only this will come. So मैं एश्योरिटी नहीं देख सकता कि ये वाली सेटिंग्स सारी फोटो पे एप्लीकेबल होंगे. यू हैव टू ट्वीक अराउंड दिस सेटिंग्स टू गेट योर बेस्ट रिजल्ट. और आपका बेस्ट रिजल्ट ही फाइनली माना जाता है. एंड यू कैन पोस्ट दैट इन इंस्टाग्राम एंड यू कैन अगेन आस्क योर कमेंट्स फॉर योर फ्रेंड्स ऑल्सो. और किसी से पूछ सकते हैं. हाईलाइट्स, यहाँ पर जो स्काई है यहाँ पर थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो गया, राइट से थोड़ा सन आ रहा है. तो what I'll do is I'll little bit reduce the highlight to let's say -38. बहुत अच्छा लग रहा है and I'm retaining the details also. Always reduce the highlights to retain the details. Shadow यहाँ पर, and as you can see there are a lot of shadows. What I'll do is a little bit I'll keep in the middle or almost kind of middle. And white and blacks also, again it's your preference. आप white prefer करते हैं, black prefer करते हैं. Like let me just show you. White means the white aspect will glow more, and in black it will darken the black. So you got the point, right? So आपको क्या करना है, ब्लैक और वाइट को थोड़ा सा ऐसे बैलेंस में रखना सो दैट इट लुक्स नाइस एंड प्लीजिंग. ऐसा नहीं कि वाइट ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वाइट लग रहा है, ब्लैक बहुत वाइट के क्लोज लग रहा है. यू अंडरस्टैंड द ग्रे स्केल, राइट? मैं बहुत टेक्निकल जा रहा हूँ, आई नो, बट दिस इज हाउ फोटो एडिटिंग वर्क्स. ओके, नाउ कमिंग टू द कलर, वी हैव टेम्परेचर, टिंट एंड वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन. भाई फॉर टिंट आपको कुछ छेड़ना नहीं है until or unless you have to make your photo
बहुत धमाकेदार और मेले टाइप का, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स विल बी देयर. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, दिस ऑलरेडी अ सनी डे, सो आप इसको थोड़ा सा सैचुरेशन नहीं बनाएं. आई प्रेफर दिस फोटो टू बी लिटिल ऑन द कूलर टिंट, आई मीन द कूलर साइड. सो थोड़ा सा ब्लू वाइट, थोड़ा सा रेड वो सब मिक्स रहेगा. And vibrance, again I'll give you a main tip that if you are increasing a vibrance, just reduce the saturation. 10 बढ़ा रहे हैं तो around 4 or 3. This is my principle, I don't know, you can try out your own and do let me know in the comment ताकि मुझे भी मैं एक्सपेरिमेंटों पे सीख सकूँ. Okay, so I just increase the vibrance, I'll little bit reduce the saturation. तो this will only come by experimenting. And अगर if vibrance आप बहुत ज़्यादा बढ़ा तो look the sky looks too artificial, so I will say just around 71. and I think this is also looking little, and down पे भी आपको थोड़ा blue दिख रहा है. So what you have to do, a little bit reduce the saturation. As you can see now it's fine. So वो होता है, you have to be very minute, and I am using an AMOLED panel. Of course I will be little, I mean मुझे कलर थोड़े पंची दिखाई दे रहा है. I don't know about you, if you are using a TN panel or something else, थोड़ा सा कलर आपको अपने हिसाब से ट्वीक करना पड़ेगा. And next is like effect and all, nothing. यहाँ पर आपको क्या करना है, आप अब डीहेज करेंगे तो मज़ा आ गया ना, मेला हो गया. नथिंग, सो यू हैव टू जस्ट डीहेज. आप वाइट करेंगे तो वो वाइट के जाएगा, यहाँ डार्कर हो जाएगा. सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट पुट इट समवेयर हियर अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग, एंड देन थोड़ा सा विनेटर रखना है ताकि थोड़ा सा ड्रामा आ जाए. इट एड्स अ ड्रामा टू योर पिक्चर. एंड या, एंड यू कैन लिटिल बिट शार्पन अराउंड. And इतना ही था. These are the free tools available, and if you want to go with remove chromatic aberration वगैरह, so you can do that as well. So this is, as you can see, this is upgrade to premium. अगर मेरे को adjust, if you want, I have to adjust and perspective like upgrade, and on the right particular corner if I have to select and make that portion little brighter, of course I have to go with premium. So अभी हमको चाहिए नहीं, हम तो उतने एडवांस है नहीं, हम तो I am making a beginner tutorial. So yeah, let's leave that. Okay, so अभी भी पिक्चर में बहुत सारी गड़बड़े हैं. फॉर एग्जाम्पल, एज यू कैन सी माई फेस इज़ नॉट लिट अप सो नाइसली. सो व्हाट यू हैव टू डू इज नथिंग, वेरी सिंपल. यू जस्ट हैव टू गो टू, सॉरी आई जस्ट हिट द, आप अंडू कर सकते हैं हमेशा. सो यू जस्ट हैव टू लिटिल बिट इंक्रीज द ब्राइटनेस. एज यू कैन सी नाउ इट्स लुकिंग फाइन, बट आई नो दिस फोटो व्हाट आई शोन इज लिटिल बिट saturated, I mean little bit on the yellowish tint. This is on the cooler tint. So of course मेरे टेस्ट बदलते हैं, so सबके बदलते हैं, तो you have to try accordingly. So almost all same result आ गया. So what I'll show you the comparison. आप click करें, this was it, and now this is it. How many minutes? Almost 2 से 3 मिनट में आप ये रिजल्ट, मैं of course ट्यूटोरियल पे बता रहा था तो टाइम ज़्यादा लग गया, वरना तो ये 2-3 मिनट का काम है. एंड उसके ये वाला फोटो, एंड वन मोर क्विक टिक. आपके पास जैसे आपने भी सेम पोज में, इफ़ यू टुक द, आपने भी सेम पोज में लिया है एंड आपके दोस्त ने भी सेम पोज में लिया, एंड ही इज़ लाइक ओके एडिट एंड गिव मैन, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम वेस्ट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, इफ दिस पिक्चर इज़ ऑफ योर फ्रेंड, योर ब्रदर, और किसी का भी हो सकता है, आपको कुछ नहीं करना है. देयर इज अ शॉर्टकट. बहुत कॉपी पेस्ट इज आवर बेस्ट फ्रेंड, हमेशा से रहा है, एग्जाम में भी रहा है. सो व्हाट यू हैव टू जस्ट गो इज ट्रिपल डॉट, कॉपी सेटिंग्स, कुछ नहीं करना. यू डोंट हैव टू ट्वीक एनीथिंग. इफ यू चेंज एनीथिंग, द ऑफ कोर्स द रिजल्ट विल बी रिसेंबल्ड इन द फाइनल आउटपुट. जस्ट कॉपी द सेटिंग्स, just go over here. This picture looks similar, but the dimensionality is little bit different. No problem, you have to just paste it and see the magic. Yeah, as you can see, the results are amazing. It took me how much, from 10 to 15 seconds for after discussing me how it works. So this is a key shortcut point, and as you can see, there is a lot of difference. So I hope you like this tutorial, and I am gonna be coming up with a bunch of a preset for indoor, outdoor, and all kind of photos, travel photographs. So do stay tuned to my channel. And one quick tip I want to give is, this is a JPG image I have shot on my phone, and if your phone supports DNG, I mean the raw image, you do take your photos in raw as well as JPG, which are very important photos. Take it in raw at least, because their clarity won't be degrading, and you know the raw photos we have a lot of flexibility, lot of boundaries to edit. So I will say आप raw में ही photo लें and you can edit. मैं as well as I will make a tutorial for PC also. इसमें थोड़ा एडवांस जाना पड़ेगा, because PC is like you have to completely put your mind in and work. तो मैं आपको बताऊंगा कि PC के लिए भी कैसा ट्यूटोरियल बनेगा.
Of course, do let me know how was it the simple same tutorial. Again, people will tell that there are graphs to work on with the Lightroom. Yes, it is there, but this is for complete basic जो कि Instagram पे भी new है. Then like people are get tired of using Instagram default picture, they can try out this. Of course, it will add value to your picture, definitely. If it is adding, do let me know in the comment section. Until then, bye bye, take care, and namaskar.